Hello, student. I, Dr. Vinod Kumar Bairwa, Associate Professor of English, Government College Bandiku, again present with BA Part third years paper first poetry. I am along with Bhavbhuti's views towards poetry. In previous poem, we have discussed a lot about Kalidasa, who has given a beautiful description about his poetry always worthy when it is old. Bhavati in the same stream. In this poem, in the four stanzas, we will discuss about the ideas of Bhavati towards the poem. The same title is poetry always worthy when it is old. Bhavuti's life is probably was the later half of 7th century. It is said that he was lived in the 18th century. Probably his Bloom's career as a poet is recognized from 693 to 729. He was the resident of Padampura in Vidarbha of South India in Gaudiya district of Maharashtra near the border of Madhya Pradesh. Bhabhuti, as mentioned in this slide, the 18th century Indian scholar, noted his plays and poetry written in Sanskrit. His plays are considered the equal of the works of Kalidasa. Bhabhuti was born, as I told you earlier, in Padampura, Vidarbha in Gaudiya district on Maharashtra and Madhya Pradesh border. Uh, Bhabhuti is one of the uh, poet who was the devout worshipper of Lord Shiva as Kalidas was. Many sloks were composed by him in praise of Lord Shiva. It is learned from Kallan's work that is named Raj Tarangani that Bhabhuti was a court poet of Raja Yashovarman of Kannauj. His active life, or to say his active career as a poet, is supposed to be, as I told you earlier, from 693 to 729, or to say AD after anatomy. He had extraordinary command over the Sanskrit. Earlier in previous poem, हमने जो कालिदास के बारे में चर्चा की थी तो कालिदास और भावभूति दोनों कालिदास थोड़े पहले हुए वो जो कहेंगे कि 475 एडी के आसपास हुए और इसीलिए उनको 5th सेंचुरी के पोइट के रूप में माना जाता है तो ऑलमोस्ट ये टू से 200 ईयर्स लेटर हुए हैं बट ही इज़ इक्वली इंटेलेक्चुअल और टू से द ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक कालिदास Bhavati, no doubt, he was born as an intellectual, and Bhavati wrote many works such as Mahavir Charitra, Uttar Charitra, Malti Madhav, and many more. In Mahavir Charit is his first play in which uh, Lord Ram's marriage, Ram's exile, Sita's abduction, and Ram's coronation have been described. His fame and as a dramatist is based chiefly to say on Uttar Ramcharit. In Uttar Ramcharit, Ram's biography after his coronation has been described in the play Malti Madhav, the love and marriage of Malti and Madhav.
have been described. Malti Madhav is purely imaginative story. Um, the poet, the plot of the play Malti Madhav is very attractive. In Bhavuti's dramas, extraordinary. The characterization, the plot constructions, the execute, language, and style are found. Bhavati also composed sloks on the principle of poetry and uh, the criticism. So Bhavati is equally a poet who is in the queue of Kalidasa. Now, I would like to give a brief introduction about the poem. The present poem is of four lines in which भावभूति सेज दैट कि कुछ एक जो विद्वान हैं आलोचक हैं वो भावभूति की कविता और उसके काव्य का वास्तविक और जिसको बोलते हैं कि इंट्रिंसिक जो यूटिलिटी है जो मोल है उसको नहीं पहचान पाते हैं तो उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं सो भावभूति सेज कि आई डोंट केयर ऑफ their criticism. Let them to do. If they wanna to criticize me, let them to do. वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है. अगर वो दोष निकालते हैं तो निकालने दें. इट इज़ देयर ड्यूटी. मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसका असेसमेंट नहीं करते हैं, करने दें. दे वांट टू क्रिटिसाइज, लेट देम टू. वो खुले में सबके सामने उपवास उड़ाते हैं तो उड़ाने दें. आई डोंट केयर ऑफ दैम. और इसके साथ साथ बाहुबली बोलता है कि जो वो प्रतिकूल आलोचना है जो इनके द्वारा की जा रही है उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आई डोंट केयर ऑफ दैम. किंतु भावभूति जो है इस बात तो बहुत क्लियर बोलते हैं कि जो वो लोग मेरी खुले में मजाक उड़ाते हैं ओपनली मेरे बारे में जो क्रिटिसाइज करते हैं उपहास करते हैं उसके प्रति थोड़े से उदासीनता जरूर रहते हैं और बोलते हैं कि लेट देम डू. वो भावभूति को पूर्ण रूप से यह कहते हैं कि मतलब इंट्रिंसिक जिसको बोलेंगे ना कि जो आंतरिक रूप से उसके महत्व को जब समझेगा मूल्यांकन करेगा तो उसका महत्व को समझेगा तब जा करके उसको पता लगेगा कि कौन है वो. ऐसे व्यक्ति उनके विचारों में सम्मिलित होगा अर्थात सीधे शब्दों में कहें हम कि जब उसके विचारों से सहमत होगा तब जाकर उसको पता चलेगा. निश्चय ही संसार का अंत इन आलोचकों के साथ नहीं हो रहा है नो डाउट. जो उसकी कविता है जो उसका उपवास कर रहे हैं भावभूति अपना एक डेड जिसको कहा जाए बिलीव्ड हैं फर्म्ड हैं और वो अपना एक एश्योरेंस देते हैं कि भविष्य में उसकी कविता के मूल्यांकन को देखा परखा जाएगा जांचा जाएगा उसके महत्व को समझा जाएगा और उसके विचारों को जो उसकी कविता में अभिव्यक्त हैं लोग उससे समझेंगे. सो मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता. सो भावभूति का बहुत जो एक क्लियर मैसेज है कि सम जो लर्नेड critics डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल एंड intrinsic significance of Bhavbhuti's poetry, they find fault with his poetry and do not appreciate it. They make adverse criticism of it and publicly make fun of it. But Bhavbhuti does not care at all for their adverse criticism. He remains indifferentiate to their adverse criticism and publicly ridiculing of his poetry. Bhavati is fully confident that the day will come when a man will understand the real and intrinsic significance of his poetry and appreciate it. Such a man will share his thoughts. Certainly, the world is not coming to an end with these critics who ridicule his poetry. Time is endless and the world is wide. Thus, Bhavbhuti expresses his confidence that in future his poetry will appreciated and his thought expressed in his poetry will be shared by the people. He is very optimistic towards his towards the future. Uh, in this poem, we can just find him as a poet of optimism. आशावादिता के रूप में जानते हैं. ठीक हम यहाँ पर आई वांट टू जस्ट कोट सैली
where in Westwind he says that if winter comes can spring be far behind, जो इस बात का इंडिकेशन है वो इस बात को बताता है कि ठीक है, तकलीफ आए हैं, पीड़ा आए हैं, तो सुख भी जरूर आएगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये संसार इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। हमको बहुत सिंसियर एफर्ट्स अपने मैनेज करने होंगे। लेटर और सुनर the day will come when the people will recognize his utility, his ideas, or once a while his ideas spread towards the in the world, then they will recognize the importance of his ideas. Bhavati just wanted to change the society. He wanted to bring some sort of जिसको कहा जाए कि एक आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिससे कि वो बताना चाहते हैं कि एक जो इंटेलेक्चुअल वन होता है वो कुछ समय के लिए उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। यानी कि कुछ समय के लिए चीज़ें आपके विपरीत हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में निश्चित रूप से वो ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। द प्रेजेंट पोइम, भावभूति का जो आइडिया है, द इन दिस four lines stanzas, Bhavbhuti give the same thought. Is poetry always worthy when it is old? So Bhavbhuti expresses his views towards his poetry. Look at the text. If learned critics publicly described, if learned learned one, जो क्रिटिक्स हैं पब्लिकली उसको डिराइड करते हैं, डिराइड करना मेक फन, रिडिक्यूल, अगर उसकी जो पोइम है उसको रिडिक्यूल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, माई वर्स मेरी पोइम का अगर वो मजाक उड़ाते हैं, वेल अच्छा है, लेट देम, उनको उड़ाने दो, आई डोंट केयर ऑफ देम, नॉट फॉर देम आई रोट, देखिए, रोट कंपोज, रिटन, रॉट, लिखा है, मैंने उन लोगों के लिए नहीं लिखा है जो कि मेरी पब्लिकली मजाक उड़ाते हैं, जो मेरी जो पोइम है, जो मेरे विचार हैं, मेरे आइडियाज़ हैं, उनको अगर वो क्लियरली नहीं मानना चाहते हैं तो लेट देम टू डू। मैंने उनके लिए नहीं लिखा है, मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो कि मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, जो मेरे विचारों को समझ रहे हैं। आई जस्ट रोट अबाउट दोज, फॉर दोज पीपल्स हु हैव सम सॉर्ट ऑफ talent, or to say have some sort of knowledge, or some sort of to say कि बुद्धिमत्ता है उनके अंदर। सो मैंने उन लोगों के लिए लिखा है, वन डे, अगेन ही सेज ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वन डे a man shall live to share my thoughts, he says that कि the world is नॉट गेटिंग टू एन एंड, एक दिन जरूर आएगा, वन डे मैन शैल लिव, जब तक आदमी जीवित रहेगा एक दिन वो मेरे आइडियाज़ को शेयर करेगा, मेरे थॉट्स को शेयर करेगा। बिकॉज फॉर टाइम इज एंडलेस, जो समय है वो अनंत है, एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड द वर्ल्ड इज़ वाइड, और जो विश्व है बहुत विस्तृत है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो आइडियाज़ हैं उनको लेटर और शोनर कोई ना कोई एक इंटेलेक्चुअल, एक लर्नेड व्यक्ति आएगा जो समझेगा, और फिर मेरे आइडियाज़ को स्प्रेड आउट करेगा इन द वर्ल्ड। और एक बार मेरे आइडियाज़ को अगर वो स्प्रेड आउट करेगा वर्ल्ड के अंदर, तो निश्चित रूप से वो मेरी महत्ता को पहचानेंगे, मेरी पोइट्री को पहचानेंगे। राइट नाउ उन लर्नेड पीपल्स के लिए मेरी जो पोइट्री है, हो सकता है कि वो इतनी मजबूत नहीं हो, इतनी इंपॉर्टेंट उन्होंने नज़र नहीं आती हो, दैट्स वाई दे आर मेकिंग फन, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो लेट देम टू डू, आई डोंट केयर ऑफ दैम। So Bhavbhuti expresses his indifferences to the adverse criticism of his poetry made by the some learned critics. He says that if some learned critics considered his poetry to be no worth and ridicule it, let them to do. He says that he does not care that all for such adverse criticism. Moreover, he declares that he did not compose his poetry for such critics who find fault in his poetry unnecessarily without understanding the significance of it. Bhavbhuti, without understanding, Bhavbhuti also says that he says that he is full of confidence that one day will come when a man will understand the worth of his poetry and appreciate it. Such a man will share his thoughts embodied in his poetry
Um, and Bhagavati also further says that the time is endless and the world is wide. The world is not coming to an end. These critics who ridicule his poetry, Bhagavati says that he is very sure about the future and his poetry will appreciate it, and his thought in the poetry will be shared by the people. Bhagavati expresses the optimism about the poetry of the and his thought. तो कुल मिलाकर के जो वो घोषणा भी करता है कि ठीक है, मैं उन लोगों की कतई चिंता नहीं करता जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, उनके द्वारा उनको करने दो। हाँ, आई एम लिटिल बिट सैड, मैं थोड़ा सा एक पैसिव हूँ उन लोगों के प्रति, उदासीन हूँ जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, मेरे थॉट्स को नहीं समझ रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो करने दो, एक दिन ज़रूर आएगा। ये प्रतिकूल जो आलोचना वाले लोग हैं, मैं इनकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं लेकिन इस बात की घोषणा ज़रूर करता हूँ कि जो मैंने मेरे जो कुछ पोइम के बारे में मैंने लिखा है, उसके ऊपर अनावश्यक जो लोग दोष निकालते हैं उनको निकालने दो। बट मैं डेड श्योर हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आएगा जब एक व्यक्ति मेरी कविता के महत्व को, मेरे विचारों के महत्व को समझेगा, मूल्यांकन करेगा और वो सोसाइटी में और इस वर्ल्ड में स्प्रेड आउट करेगा। और एक बार जब वो स्प्रेड आउट करेगा तो मेरे जो विचार हैं निश्चित रूप से वो इस संसार में फैलेंगे, और जो मेरे विचार हैं उनसे लोग सहमत होंगे। दे विल शो देयर कंसेंट एंड वो इस ऑप्टिमिज्म के साथ में है, इस आशावादिता के साथ में है कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वन डे, एक दिन ऐसा आएगा जब उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, एंड सर्टेनली वो जो वो वक्त है वो आज नहीं तो कल आने वाला ज़रूर है। और इसी आशावादिता को यहाँ पोइट ने लास्ट लाइन में इस बात को बहुत क्लियर बोला है कि फॉर टाइम इज़ एंडलेस एंड द वर्ल्ड इज़ वाइड, सो आई डोंट केयर ऑफ दोज सम sort of peoples who are making fun, who are criticizing me without any reason. So students, this is the poem. These are the ideas of Bhavbhuti about the poem and his works. So now I'm getting stop, or I'm to say कि the poem is over now. In the next class we will discuss about Bharatari. Till then, bye bye. Thank you very much.